अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। I am Professor Chap, Head of Body Department from Government Emerson College, Bhutan. We are discussing chapter number 19 of second year biology. The topic that we want to discuss today is types of growth. There are two types of growth. One is primary growth and other is secondary growth. The growth which takes place along the length of the plant body is known as primary growth. Primary growth takes place by the activity of apical meristem. और एपिकल मेरिस्टेम क्या है जी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। वो मेरिस्टेम जो रूट और शूट की टिप पे होता है उसे हम एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी से प्राइमरी ग्रोथ होती है। So the growth which takes place in the length of the plant body is known as primary growth. Primary growth takes place by the activity of apical meristem. Apical meristem is that meristem which is present at the apex of root and shoot. Apex means tip. The second type of growth is secondary growth. The growth which takes place in the girth or diameter or thickness of the plant body is known as secondary growth. The growth जो प्लांट की मोटाई में हो, थिकनेस में हो, डायमीटर में हो, थिकनेस को हम गर्थ भी कहते हैं, मोटाई में हो, उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो सेकेंडरी ग्रोथ इज दैट ग्रोथ व्हिच टेक्स प्लेस इन द गर्थ, थिकनेस और डायमीटर ऑफ द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट इज फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस मीन स्टेजेस। देयर आर 4 phases or stages of growth. Number 1, zone of cell division. Number 2, zone of elongation. Number 3, zone of maturation. And number 4, zone of differentiation. अब इन चारों zones को हम एक एक करके लेते हैं। Firstly, we are taking zone of cell division. Zone means region, area. Zone of cell division रूट की एपेक्स पे मौजूद होता है, रूट की टिप पे मौजूद होता है और रूट की टिप को एक स्ट्रक्चर कवर करती है जिसे हम रूट टैप कहते हैं। तो एट द वेरी एपेक्स, एट द वेरी टिप ऑफ द रूट टैप इज प्रेजेंट। द फंक्शन ऑफ रूट टैप इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द रूट। क्योंकि रूट जमीन के जो सख्त पार्ट्स हैं उनमें से गुजरती है तो रूट की जो टिप वाला हिस्सा है वो डेलिकेट होता है, यानी नाजुक होता है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है एंड दैट प्रोटेक्शन इज कवर्ड इज प्रोवाइडेड बाय द रूट टैप। जोन ऑफ सेल डिवीजन या एरिया ऑफ सेल डिवीजन, रीजन ऑफ सेल डिवीजन, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इस जोन में, इस एरिया में सेल डिवाइड होते हैं, सेल तकसीम होते हैं। और आप जानते हैं कि सेल डिवीजन की 2 टाइप्स हैं, एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। तो यहाँ पे जोन ऑफ सेल डिवीजन में जो सेल डिवाइड होते हैं वो माइटोसिस के जरिए से होते हैं। तो इन द जोन ऑफ सेल डिवीजन द सेल्स डिवाइड बाय माइटोसिस। और इस ये जो जोन है प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट। इस जोन में जो सेल्स हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, उनकी कुछ खसूसियात हैं। उन सेल की खसूसियात कौन सी हैं? पहली बात कि ये सेल साइज में छोटे होते हैं। द सेल प्रेजेंट इन द जोन ऑफ सेल डिवीजन और स्मॉल इन साइज। इन सेल का नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि इनमें स्फेरिकल न्यूक्लियाई होते हैं। स्फेरिकल का मतलब है गोल, यानी उनकी जो शेप है वो सर्कुलर होती है, स्फेरिकल होती है, गोल होती है और ये सेल के सेंटर में मौजूद होते हैं। इनका नेक्स्ट कैरेक्टर ये है कि ये सेल जो जोन ऑफ सेल डिवीजन में है ये नॉन वैक्यूलेटेड है, यानी इनमें वैक्यूल्स नहीं होते। और इनका नेक्स्ट कैरेक्टर ये है इनमें इस जोन में है, जोन ऑफ सेल डिवीजन में
साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के लिए मटेरियल सिंथेसाइज होता है। तो जोन ऑफ सेल डिवीजन इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट। द सेल इन दिस जोन डिवाइड by mitosis, and the character of these cells are the cells are small in size. They are spherical. They are spherical. They have spherical nuclei which are present in the center of the cell. The cells are non-vacuolated. That is, the cells don't have vacuole. In this zone, synthesis of cytoplasm and cell wall material takes place. फिर ग्रोथ का सेकंड जोन वो है, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं, वो है जोन ऑफ इलॉन्गेशन। ये जोन ऑफ इलॉन्गेशन है, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द जोन ऑफ सेल डिवीजन। इसकी जो लेंथ है ये 4 मिलीमीटर होती है, और इस जोन में जो सेल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है अप टू 154। और ये वॉल्यूम क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि इस जोन में जो सेल्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर का अपटेक होता है। इस वजह से सेल इस जोन में अपने ओरिजिनल साइज से 154 इंक्रीज हो जाते हैं। तो द सेल्स इन दिस जोन इंक्रीज इन वॉल्यूम अप टू 154 ड्यू टू अपटेक ऑफ वाटर। इस जोन में जो सेल वॉल है सेल की, उसकी प्लास्टिसिटी इंक्रीज हो जाती है, लचक इंक्रीज हो जाती है, और प्लास्टिसिटी इंक्रीज होने की वजह से सेल वॉल पे जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, यानी कम हो जाता है। प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल इंक्रीजेस एंड द वॉल प्रेशर इज रिड्यूस्ड, द वॉल प्रेशर इज डिक्रीज्ड। इन दिस जोन आल्सो द सिंथेसिस ऑफ cytoplasm and cell wall material goes on, proceeds on, चल लेती है। तो फिजिकल ग्रोथ में एक जोन ऑफ सेल डिवीजन, जोन ऑफ सेल डिवीजन से पीछे की तरफ जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तीसरे जोन है जोन ऑफ मैच्योरेशन। जैसे डायग्राम में आप देखते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन, इसमें जो सेल्स हैं ये अपनी फाइनल शेप अटेन कर देते हैं, हासिल कर देते हैं। अटेन का मतलब है हासिल करना। द सेल्स इन दिस जोन अटेन देयर फाइनल शेप। और इस जोन में जो सेल्स हैं वो सेल जो टेथ और कॉर्टेक्स में डिवेलप होते हैं वो फर्दर इलॉन्गेट नहीं करते। द सेल विच डिवेलप टू टेथ एंड कॉर्टेक्स डाउन इलॉन्गेट फर्दर, लेकिन फाइबर्स और ट्राइकियल्स ये इलॉन्गेट करते हैं, इनका साइज बढ़ता रहता है। जैसे जैसे प्लांट बॉडी का जो एक्सेस है साइज है वो बढ़ता है। फाइबर्स एंड ट्राइकियल्स आल्सो इलॉन्गेट। चौथे जो जोन है वो है जोन ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जैसा कि इसके नाम से जाहिर है ये डिफरेंट से है। तो डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज आर फॉर्म। इस जोन में जो सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल्स हैं वो थिक हो जाती हैं। द सेल वॉल्स ऑफ द सेल इन दिस जोन बिकम थिकर। दूसरे कई सेल जो है उनकी जो सेल वॉल्स है दे बिकम पिटेड। पिटेड का शब्द पेट से, पेट का रसी मतलब है गढ़ा, यानी इस हिस्से में जो सेकेंडरी वॉल है, सेल वॉल की दो लेयर, एक प्राइमरी वॉल एक सेकेंडरी वॉल। जो सेकेंडरी वॉल है उसमें कैविटीज प्रोड्यूस हो जाती है और उन कैविटीज को पिट्स कहते हैं। पिट से लफ्ज है पिटेड। तो वॉल सेल वॉल्स ऑफ मैनी सेल बिकम पिटेड। नेक्स्ट है इसमें जो जाइलम वेसल्स हैं, जाइलम आप जानते हैं जाइलम इज अ टिश्यू, और इसका जो काम है वो कंडक्शन ऑफ वाटर और डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस है। जाइलम में पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जहां से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है, और स्ट्रक्चर को वेसल कहते हैं। तो वेसल की जो सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल्स है वो थिक हो जाती है। और इस जोन में जो सेल्स हैं दे डेवलप न्यू स्ट्रक्चरल फीचर्स, अपनी नई स्ट्रक्चर्स, अपनी फीचर कैरेक्टर जो फाइनल है वो अस्यूम कर लेते हैं, इख्तियार कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन
is the production of different types of cells and tissues. The cell walls of the cell in this node become thicker. Cell walls of any cell become pitted. Thickening appears in the cell wall of xylem acids and cells develop new structural features. इसके साथ ही ये टॉपिक टाइप्स ऑफ ग्रोथ खत्म होता है। एंड एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपनी सजेशन भी देंगे। आप जो सजेशन देंगे लेक्चर को इम्प्रूव करने के लिए वो मेरे लिए कीमती सरमाया है। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।